about welded joints. And we talked about welded joints that were subjected to torsion. We also talked about welded joints that were subjected to bending, and those weldments where the load was uh, eccentric, the load was applied somewhere else. Now, let's talk a little bit more about welded joints. Uh, let's say if we are looking at the strength of welded joints, what do we need to do? Okay, uh, there are two things in there. First of all, one is the parts that you want to join together, and then there is the weldment, which is the weld material that you are going to weld with. So in a welded joint, what we need to do is we must check that both of those are safe. Both of those have a strength that can resist the stress that the welded joint is subjected to. You must check the failure in the parent material, where the parent material is, the parts that you want to join, and in the weld. Now, weld strength you have that depends on the choice of the electrode material that you take, which is the weld material, the material that you would weld with. Now, weld material is often stronger than the parent material. So this is in general, weld material that you would use that will be stronger than the parent material, than the parts. So parent material experiences heat treatment near the weld when you are welding. So what happens is that um, the nearby portion of the weldment gets heated. And when that gets heated, uh, it is called HEZ. That is the heat affected zone. Heat affected zone. So there might be some change in the properties of that material in the vicinity of the weldment. So cold drawn parent material may become more like hot rolled in the vicinity of the weld, in the neighborhood of the weld. So for example, we are going to, let's say, if we weld something uh, like this, just for example, if we are welding something over here, so what happens is that near the weldment, if this is the weldment, then near this weldment, what happens is that we might, uh, you know, have some effect of this weldment in the vicinity of this weld. ठीक है जी? तो हम often welded joints are designed by codes, ठीक है जी, rather than designing it by the conventional factor of safety. जैसे और चीज़ों में हम क्या करते हैं कि what we do is we take the factor of safety and um, we relate the stress and the strength um, with that factor of safety in design things. ठीक है जी? लेकिन यहाँ पे जब हम वेल्डिंग जब करते हैं तो rather we design these by following codes. For example, the American Welding Society,
कोड्स या और कोड स्टैंडर्ड कोड जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। सो लेट्स सी हाउ डू वी गेट इनटू अ वेल्डेड जॉइंट, ठीक है जी। ये अगर इफ यू लुक एट दिस टेबल, टेबल 9-3, so this table 9-3 lists the minimum weld metal properties. And this is the material that you are going to weld with, the electrode that you are going to weld with. Um, and this is American Welding Society electrode number. So this is a standard number that you would see over here. ये आपकी standard numbers है. For example, you have this E60XX. Now, what is this E60XX means? Okay, this is an electrode. ठीक है जी? So this is an electrode with electrode, and 60 जो है, that is the tensile strength of this electrode. So tensile strength in kpsi of this electrode, ठीक है जी। तो ये जो दूसरा नंबर है, that is approximately the tensile strength of it, which is 62 in this case. Similarly, if you look at the E70, that is 70 kilopascal. Similarly to E80, it is 80 kilopascal, kilo psi, sorry, and so on. ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास नंबर है, that represents this electrode and its properties. Now, this E60XX has 50 yield strength. ठीक है जी। Similarly, the percent elongation in it is 17 to 25. Now, if you look here, there is this XX. Now, after the two digits, after E, the XX is basically you can have it prefixed by 4 or 5 digits numbering system, in which the first two digit designate the approximate tensile strength, जो कि यहाँ पे हमने देखा कि it is listing the tensile strength. For example, E60 is the tensile strength is about 60. ठीक है जी। Now, and the last digits include the variables in welding technique. For example, how much current do you supply? If you remember, you probably have done electric arc welding, and you can change the amount of current. But not only the current, you can also list the welding speed. This speed से आप welding कर रहे हैं. तो this in welding these things matter. Current, the amount of current that you are that you are using, and the technique that you are using, the speed at which you are welding. ठीक है जी। तो so the complete set of application may be obtained from AWS. वो आप ले सकते हैं कि क्या 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 होना चाहिए, ठीक है जी। हेलो जी, अच्छा जी। So now let's see, अगर हम आगे जाएं, right? तो what do we have के these are the codes for welding, ठीक है जी। और यहाँ पे आप देखें तो this column lists the type of loading that you have on the weldment, ठीक है जी। टेंशन वेल्ड है, बियरिंग टेंशन लोड है, बियरिंग लोड है, बेंडिंग है, shear है, या सिंपल कंप्रेशन है, and the type of weld that you are going to have, ठीक है जी। So this is a representative of the different welds that you perform. Now, the permissible stress that you can have in this weldment, which has a tension, which is a tension weld, and it is butt joint, it is
60% ऑफ द यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है जी, तो आप कितना, ये इट विल बी द वेल्ड मेटल का जो स्ट्रेंथ है दैट विल बी 60% ऑफ द यील्ड स्ट्रेंथ। एंड for now we are not talking about this, as this is the factor of safety, but this factor of safety is calculated when you are using this code, when you are using this code for the different types of loading that you have। ठीक है जी, तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बियरिंग लोडिंग है, तो फॉर अ बट जॉइंट यू विल यूज 90% ऑफ एस वाई। सिमिलरली इफ इट इज शेयर, तो शेयर के लिए यू विल यूज 30% ऑफ द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है जी, और ये जो यहाँ पे ये जो चीज है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, दिस फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज एम्बेडेड इन दिस कोड। ठीक है जी, बात समझ आ गई है? दिस फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इनसाइड दिस कोड। जी नादरुल्लाह। सर ये यील्ड स्ट्रेंथ जो है ये वेल्डेड मटेरियल का होगा या जो पेरेंट्स मटेरियल है इसका हम सपोज करेंगे? अच्छा, व्हाट इज रिटन अप ऑन द इन द कैप्शन ऑफ द टेबल? ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है। वेल्ड मेटल के लिए। लेकिन सर ये इफेक्ट नहीं करेगा उसको, किसको? पेरेंट्स मटेरियल को? फिर तो पेरेंट मटेरियल का अपना यील्ड स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ होगा ना। ठीक है जी सर। तो अच्छा, अब अगर हाँ, अब आप नीचे देखें, नीचे इफ यू लुक हियर, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की तो हमने बात कर ली, लेकिन देखिए शेयर में क्या कह रहे हैं हम, शेयर ऑन द बेस मेटल, जो आप कह रहे हैं बेस मेटल। ठीक है जी, टेंसाइल तो हमें मिल जाता है ना, टेंसाइल, और बियरिंग के लिए भी हमारे पास फार्मूले हैं, बियरिंग बेंडिंग उसके लिए है, लेकिन शेयर स्ट्रेस जो है वो हम, इट शुड नॉट एक्सीड 40% ऑफ एस वाई ऑफ द बेस मेटल। मतलब बेस मेटल के लिए हम शेयर में कितना लेंगे, कितना लेंगे? 0.40% ऑफ 40% लेंगे। यील्ड। ठीक है जी, और ये आपके वेल्ड में, मतलब ये आपके जो बेस मेटल है या पेरेंट मटेरियल है उसके लिए है। ठीक है जी, तो अच्छा ना, लेट्स सी, थोड़ा सा आगे हम जाते हैं, और अच्छा ये आपके अगर फिटीग लोडिंग है, तो फिटीग लोडिंग में हम क्या करेंगे कि वी विल यूज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है जी, सॉरी, फैक्टर ऑफ द स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। तो ये आपका के एफ एस जो है, योर स्ट्रेस एनहांसेस बाय दिस नंबर। ठीक है जी, और ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर्स के लिए आपके पास जो है सॉरी, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर के लिए आपके पास फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर इस टेबल में दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल रीइंफोर्स्ड बट वेल्ड है, तो उसमें 1.2 आप इस्तेमाल करेंगे, एंड ऑफ पैरेलल फिलेट वेल्ड है तो 2.7 एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो मुख्तलिफ वेल्ड्स के लिए आप ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है, ये इससे आप अपने स्ट्रेस को मल्टीप्लाई करेंगे, या योर स्ट्रेस इज गोइंग टू बी एनहांस्ड बाय दिस नंबर। ठीक है जी, नाउ अच्छा ये टेबल, दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। ठीक है जी, यहाँ पे अगर आप देखें, सॉरी, तो व्हाट डज दिस टेबल लिस्ट? देखिए, दिस टेबल is giving you the allowable load at very end or various sizes of fillet weld। ठीक है जी, तो यहाँ पे if you look over here, the strength level of the weld, and that is the EXX। For example, this is your EXX E60XX। ठीक है जी, E60, this XX is 60, 70, 80, 90, 100 and so on। तो इसके लिए what is the allowable shear stress on the throat? ठीक है जी, you know what the throat is। ठीक है जी, तो मतलब थ्रोट पे allowable shear stress कितना होगा? for the E60 this is going to be 18,
ठीक है जी. um, 18 kpsi of fillet weld or partial penetration groove weld. इसी तरह E70 के लिए it is 21, E80 के लिए it is 24 and so on. ठीक है जी. अच्छा, now we also have F over here, which is the allowable unit force on the fillet weld in kip per linear inch. So it depends on the length of the weldment. कि आपका length कितना है. For example, यहाँ पे it is for the E60, it is 12.73 H. Now 12.73 H means कि आप H से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो you will get what? The allowable unit force in kip पर लीनियर इंच आपको मिलेगा. ठीक है जी. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लेग साइज जो है दैट इज 1, तो देन 12.73 टाइम्स एच. ठीक है जी. लेकिन अगेन इट इज पर लीनियर इंच. इसको आपने जो है एल से मल्टीप्लाई करना होगा टू गेट द टोटल स्ट्रेंथ. ठीक है जी. टू गेट टोटल अलाउेबल यूनिट force in the weldment. ठीक है जी. तो ये if it is 7 by 2 then it is 11.4. Similarly for a 90 EX90, if your weldment has half inch leg, then it is 9.54 per linear inch. ठीक है जी. If it is 1 inch then it is 9.54. Otherwise, if it is 2 inches, then you have to multiply this by 2. So that will become around 20.8 तकरीबन आ जाएगा आपके पास. ठीक है जी. Any question about this? Achha. Now, this is also a part of this table. ठीक है जी. And this gives you the material thickness of the thicker part joined in. कि आप कितना जो है वेल्डमेंट, जो अभी हमने वहां पे एच देखा या वेल्डमेंट देखा कि वो कितना हो, तो वो कितना होना चाहिए, वो एच कितना होना चाहिए मुख्तलिफ मटेरियल के लिए. तो इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल थिकनेस ऑफ द पार्ट्स दैट यू आर जॉइनिंग टुगेदर. फॉर एग्जांपल, इट इज up to 1/4 of an inch. ठीक है जी. तो you have to have an h of 1/8. Similarly, ये मुख्तलिफ रेंजेस आपको दिए गए हैं. ठीक है जी. तो इन रेंजेस में you would decide कि ये 1/4, 5/16 and so on. ठीक है जी. Also read this with यानी कैप्शन जो है नीचे आपके पास फुट नोट जो दिया गया है उसमें लिखा है कि मिनिमम साइज फॉर ब्रिज एप्लीकेशन डज नॉट गो बिलो 3/16 इंचेस and for minimum fillet weld size, casual does not go above 5/16 inches fillet weld for every 3/4 inches of material. तो ये चीजें these are मतलब जब आप practically जब आप weld करेंगे तो you have to seek help from these kinds of tables. ठीक है जी. क्योंकि they give you the strength of and बल्कि the allowable stress in the weld material. ठीक है. and the parent material. ठीक है जी. तो let's say अगर हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं यहाँ पे, तो ये क्या कह रहा है कि देखें there is a 1/2 inches 2 inches rectangular cross section. So 1/2 inches and 2 inches. Ji Nematullah, that's saying. Go ahead. जी सर. Ji? Assalamualaikum sir. Salam. You want to? No sir, the host connection. Sorry sir. Okay. Okay. So, um,
what we are saying is कि अगर आपके पास ये if this is cross section, well, it is a rectangular cross section and it is ½ inch by 2 inches rectangular cross section. So basically what we are saying is कि ये आपका जो है it is मतलब ऐसे थिक है ये, ठीक है जी, ऐसे मतलब इन देयर, ठीक है जी, ऐसे समझ आ रही है बात. एंड दिस इज 1/2 जो हमारे पास ये थिकनेस है. एंड इसका ये डायमेंशन जो है दैट इज 2 inches, ठीक है जी. And it is made of 1015 bar. Well, that is the material that carries a static load of 16.5 kip. तो ये आपका लोड है इस तरह से. And it is welded to a gusset plate 3 by 8 inches fillet weld 2 inches long. ठीक है जी, तो that is the length on both sides. So ये अगर आप देखें यहाँ पे तो this is the weldment जो and this is the gusset plate ये वाला, ठीक है जी. Using and it is welded on both sides using E70XX electrode as depicted in the figure 9-18. Now use the weld code method, and this weld code method से आप क्या करेंगे? Is the weld metal strength satisfactory? Is the attachment strength satisfactory? तो आप क्या मालूम कर, बेसिकली वही चीज जो अभी हमने कही, you check for the strength of the weld and you check for the strength of the parent material, ठीक है जी. तो हम क्या करेंगे कि लेट्स मूव फॉरवर्ड. सबसे पहले हम क्या करेंगे, चले आप लोग बताएं क्या करेंगे, कोई बता सकता है? सर वो पिछले टेबल से क्या कहते हैं शियर फोर्स निकालेंगे, फिर उसको कंपेयर करेंगे टेबल से. अच्छा, यस वी कैन यूज द टेबल, ठीक है जी. लेकिन सब हम दो चीजें चेक करेंगे, वेल्डमेंट, ये वेल्डमेंट और ये मटेरियल भी हम चेक करेंगे, ये मटेरियल और ये मटेरियल, ठीक है जी. तो लेट्स सी कि हाउ डू वी गो फॉर दैट. सबसे पहले टेबल 9-6 को अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे हमारे पास वेल्डमेंट की थिकनेस कितनी है, हाउ मच इज एच, दैट इज 3/4 inches fillet weld and it is 2 inches long. So let's go and look for E70XX की हम देखते हैं कि इसमें अलावेबल जो है वो कितना हमारे पास स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है जी. तो लेट्स गो बैक, E70 फॉर अ 3/8 inches, ठीक है जी. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज E70, ठीक है जी. तो E70 5.57. अच्छा जी, तो ये E70 and this is 3/8, so you are right, it is 5.57, ठीक है जी. तो ये हमारे पास 5.57 आ गया. नाउ लेट्स टेक दिस 5.57, ठीक है जी, और इसको हम लेंथ से ज़रब देते हैं. सो हाउ मच इज द लेंथ, दैट वाज 2 inches, लेकिन इट इज ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी. तो सिंस इट इज ऑन बोथ साइड्स तो हमारे पास 2L जो है, L कितना बना, L इज इक्वल टू 2 plus 2, so that is equal to 4 inches, ठीक है जी. अब ये हमारे पास 4 inches है, तो F is equal to 5.57, the value from the table, times L. So this is allowable, ठीक है जी. हम इतना फोर्स जो है वो इस वेल्डमेंट पे डाल सकते हैं, ठीक है जी. अच्छा, नाउ लेट्स सी
अगर आप यहाँ पे देखें तो व्हाट डू वी हैव, सिंस हमारे पास लोड कितना है, अगर आप पिछले स्लाइड में चले जाएं तो हाउ मच इज द फोर्स, लेट्स गो बैक, 16.5। 16.5, ठीक है जी। तो isn't that 16.5 less than this 22.28, इससे कम है ना, तो दिस मींस दैट द वेल्ड मेटल स्ट्रेंथ इज सेटिस्फैक्टरी, ठीक है जी, उसमें कोई मसला नहीं है, हमारे पास this value is greater than the amount of load that we are going to apply, so we are fine, ठीक है जी। now नंबर बी, चेक द shear in the attachment adjacent to the welds, ठीक है जी। अच्छा, shear के लिए अभी मैंने आपको आई जस्ट सेड कि सबसे पहले आप वेल्ड जो मटेरियल है दैट इज 1015 मटेरियल है, तो इफ यू गो टू टेबल A20 you can find the properties of that weld, जो जो मटेरियल है, पेरेंट मटेरियल है, उसका SY जो है वो आप मालूम कर सकते हैं, एंड दैट इज 27.5 kpsi। अच्छा, अगर टेबल में जाए तो टेबल में नहीं, टेबल से नीचे फुटनोट में अगर आप देखें तो अलाउेबल शेयर जो है अटैचमेंट में दैट इज 40% ऑफ दिस SY, ठीक है जी। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करें which is 40% of 27.5, that comes out to be 11 kpsi. Right, now let's check the shear stress tau on the base metal adjustment to the weld. So what will be the the shear stress? We already know that tau is equal to F over HL, ठीक है जी। और यहाँ पे since it is on both sides, so our H or L is 2 times of L. So F, H, L are known, and let's put the values in there, so that comes out to be 11 kpsi, और मुकाबला भी 11 kpsi और 11 kpsi के दरमियान है, right? So are we good here or not? ये ठीक है कि नहीं है ठीक? कम होना चाहिए सर। नो सर। Why no and why yes? फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगर अच्छा, आप कह रहे हो कि since this is 11 and this is 11, so if we divide 11 by 11, our factor of safety comes out to be 1. That's enough. ये आप कह रहे हो, right? यस सर यस। अच्छा, so that is why I asked this question, because we are not using the factor of safety, we are using codes, ठीक है जी। तो कोड में अगर हम दोबारा उस टेबल में वापस चले जाएं तो you would see कि not just the factor of safety is already embedded in there, that is अगर ये कोड हम इस्तेमाल करते हैं ना परमिसिबल स्ट्रेस की, तो वो ऑलरेडी उसमें कुछ ना कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगी। तो इवन इफ दे आर द सेम हियर, you will not look at it at the factor of safety, but you would say that it is safe, क्योंकि इस 11 में again the factor of safety will be more than 1 होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे जो SY है वो 40% लिया है। समझ आ गई बात? Do you understand? यस सर। Okay. So now let's move to सर ये दोनों पेरेंट मटेरियल के यील्ड स्ट्रेंथ सेम होगी? जी, ये अलाउेबल है और ये आपका shear stress on the base metal adjacent to the weldment है ये। तो मतलब अलाउेबल के साथ हम ये कंपेयर करेंगे ना, दैट इज बेसिकली द स्ट्रेंथ एंड दिस वन इज द स्ट्रेस, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, नाउ also the tensile stress in the shank of the attachment sigma is, वो भी हमारे पास sigma is equal to F or T times L होगा, which is the thickness of the weldment times L होगा। So 16.5 over, since the thickness is half, ठीक है जी, तो half times 2, ठीक है जी। We are talking about the shank, ठीक है जी, the and that is 16.5. The allowable tensile strength जो है
सिग्मा अलाउेबल अगर आप टेबल 9-4 को देखें तो it is 60% of SY and again when you calculate that that is 16.5 तो दोनों 16.5 है. This means that since sigma is less than or equal to the allowable, so the shank tensile stress is also satisfactory. ठीक है जी. अच्छा यहाँ पे आप देखें तो this is another problem that says कि हमारे पास यहाँ पे there is specifically there is a specially rolled A36 structural steel section for an attachment that has a cross section of in this figure जो आपको दिया गया है. मतलब this is L1 of the this is weldment basically. लेकिन बाकी there is F1, F2 and then there is F. ठीक है. तो and it says that अच्छा basically इसमें क्या है कि it is statically loaded through attachment by a load F which is 24 फिर जो ये है ठीक है ये unsymmetrically means कि ये ये load जो है ये यहाँ पे it is not at the center but it is away from the center which is at y double dash. ठीक है जी. तो he says that since it is unsymmetrical such that there is no moment to be resisted by the welds, specify the weld track length L1 and L2. ठीक है जी. For a 5/16 which is H, ठीक है जी, inch fillet weld using E70 XX electrode, and this part of the design problem in which the design variable include weld lengths and the fillet leg size. ठीक है. वो आपको यही बता रहा है कि find this L1 and find this L2. So how are we going to find this? समझो हमारे वो. Muhammad Maqsood, can you turn off your camera if